अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग ढाबा स्टाइल में स्पाइसी चिकन मसाला बना के दिखाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपी है। चलिए। ढाबा स्टाइल चिकन मसाला बनाने के लिए, स्पाइसी मसाला बनाने के लिए पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। पहले इसी बाउल में हम लोग अच्छी तरह वॉश करा हुआ चिकन ऐड करेंगे। इसी चिकन में हम लोग पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ साथ हम लोग इसमें सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। इसी में हम लोग लेमन जूस भी ऐड करेंगे। चिकन को अच्छी तरह मिक्स करे बाद जब तक ये मैरिनेट होता तब तक हम लोग जो मसाला का मेन इंग्रेडिएंट है उसका प्रोसेस देखेंगे। जो मसाला प्रिपरेशन का प्रोसेस है उसके लिए पहले हम लोग फर्स्ट इसमें क्यूमिन सीड्स ऐड करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग मेस फ्लावर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर कॉर्न भी ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग इसमें कोरिएंडर सीड्स, ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम, उसके साथ साथ क्लोव्स भी डालेंगे। इन मसालों में थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे ताकि और भी मज़ेदार मसाला प्रिपेयर हो। इन सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह रोस्ट होते ही हम लोग स्टोव से अलग करेंगे और ठंडा हुए बाद इसको हम लोग पाउडर बनाएंगे। बाउल गर्म हो गया है, इसी में हम लोग प्योर घी ऐड करेंगे। घी गर्म होते ही हम लोग इसमें थोड़े से क्यूमिन सीड्स ऐड करेंगे। क्यूमिन सीड्स ऐड करते ही हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियंस थोड़ा सा ब्राउनिश शेड में आते ही इसमें हम लोग जो पहले ही मैरिनेट करके रखे थे उसी चिकन इसमें ऐड करेंगे।
चिकन को अच्छी तरह मिक्स करे बाद इसी में हम लोग स्लाइस्ड ग्रीन चिल्लीज ऐड करेंगे। ग्रीन चिल्ली के साथ साथ इसी में हम लोग फाइनली चॉप्ड मिंट लीव्स ऐड करेंगे। चिकन इन सारे इंग्रेडिएंट्स में 10-15 मिनट पके बाद इसी में हम लोग कोरिएंडर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और टर्मरिक पाउडर भी फिर से थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसी रेसिपी को और भी टेस्टी करने के लिए जो पहले ही प्रिपेयर करा हुआ मसाला पाउडर इसमें ऐड करेंगे। मसाले ऐड करे बाद और भी डिलीशियस लग रहा है। इसको फाइनली हम लोग फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। आज का रेसिपी परफेक्टली बन गया है। इसी को हम लोग रुमाली रोटी के साथ आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए।
आज का ये वीडियो देखते ही अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करिए, उसके वजह से और भी थोड़े लोग फ़ायदेमंद हो सकते हैं। नवाब्स किचन ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी फॉलो करिए, उस पे भी ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारी टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।